Python developers. This is our, I think, 15th question problem of Python string. Okay, so let's see. This is our 15th question problem. Find length of string without using length built-in function. ओके, आपको लेंथ तो बहुत बहुत बार आपने यूज किया होगा, ये एक बिल्ट इन फंक्शन है, आप जानते ही हैं। तो इसके बिना हमें यूज किए फाइंड करना है लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग। ओके, सो लेट्स फाइंड आउट। So now we are in VS Code and let's create a file for this program. Okay, so find length dot py. Okay, then write our question problem. Find length of a string without using length built-in function. Okay, so def find length as, sorry, colon, then यहाँ पे एक count ले लेंगे, count equal to 0 to count length of string. Okay, so then for loop लेंगे हम for underscore, underscore means ये count करेगा word को, in underscore in s. okay, then ये count में plus equal to कर देगा 1, then return कर देंगे count को। आफ्टर दैट प्रिंट करेंगे फाइंड लेंथ, और लेंथ फाइंड आउट करना है हमें हेलो वर्ल्ड की। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके थ्रू। अब आप सोच रहे होंगे कि 11 कैसे आ गया, ये तो हमने 10 ही हमारे कैरेक्टर्स हैं इसके अंदर, स्ट्रिंग के अंदर, तो ये स्पेस को भी काउंट करता है। आप अगर लेंथ कीवर्ड वो बिल्ट इन फंक्शन भी यूज करेंगे तो भी ये आपको 11 ही शो करेगा। जस्ट लाइक we use return as dot length. Okay, okay 11, सॉरी। जब हम रिटर्न करेंगे रिटर्न length of s, okay, sorry, now save this and run. So you will found 11. Okay, so thanks for watching this video. Please like, share and subscribe.